स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे SBI क्लर्क मेंस कट ऑफ के बारे में। 40 why it was 40 1 year it was around 40 also. So I'll show you everything, every proof. You just watch it till the end. तो दोस्तों यहाँ पे हम प्रूफ दिखाएंगे आपको प्रीवियस ईयर्स में क्या हुआ था। आपका कट ऑफ 40 के अराउंड भी गया था मेंस में। अब क्यों गया था, नहीं गया था, सारा चीज़ हम लोग डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बस एंड तक देखते रहें आप। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चलिए पहले कुछ आपको डिटेल दिखा देता हूँ, उसके बाद बातें करते हैं। तो दोस्तों ये डाटा मैंने इंटरनेट से उठाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आपको सारा चीज़ समझ आ जाएगा, खेल समझ आ जाएगा। तो अगर हम बात करें दोस्तों 2022 का, ठीक है, 2022 का है, ये 2018 का है। अब देखिए 2000 में 40 क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे रीज़न था 40 कहने का, मतलब 40 के अराउंड में भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो हरियाणा का केस देख रहे हो आप कि 44, इट वाज अराउंड 44.25 फॉर SC कैटेगरी एंड फॉर ST इट वाज 44.25, ओके, बट नॉट फॉर ऑल स्टेट, इट वाज ओनली फॉर हरियाणा in Haryana it was this much, okay. And okay, let us talk more regarding this, okay. तो नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो बस यही था दोस्तों। लेकिन बाकी सब स्टेट में अगर आप देखिएगा तो सेम कट ऑफ था। तो यहाँ पर देखिए बाकी स्टेट में कितना है। उत्तर प्रदेश में 60, मोर देन 60, मध्य प्रदेश में 60, ठीक है। उसके बाद देखिए बाकी सब कैटेगरीज में देख लीजिए 60 है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, ओके, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, it was more than 60 only, okay. Next we have is Andhra Pradesh and Telangana. See, Andhra Pradesh and Telangana, it was also more than 60. So this was a very rare case. So actually I think, see, okay, one more thing I'll show you here, but before that, see, let us check for this also. In 2022, as I've told you, because still like many channels they are saying that in 2022 also it was not 60. From 2020 to 2024, 2023, the cutoff was neither 50 nor more than 50. Many of them were saying regarding this, but I knew that because personally I've seen many of the candidate getting selected, okay, in under the 50s only, also from the 50s, okay, in 2022, okay. So this is not a fake thing, real thing, okay. So I hope you are getting my point, what I'm trying to say here. So actually if you see here, see, this is in 2022. So we have seen that here the Gujarat case, in case of Gujarat we have seen that ST was 50, okay. ST was 50, ST cutoff was 50. So this was very rare thing, okay. Why they have taken 50 also, we'll talk about it. So just keep watching. See, next if I talk about Maharashtra, it was 52.25. See, in most of the state, actually it will be more than 60 only, okay, for ST category. But see here it depends that in some state they have taken 60 also, and in some state they have taken 50 also. So actually it's not mentioned clearly, like the cutoff, about the cutoff. So if you check here in 2018, only in this Haryana it was 44. The rest of the state it was 60. See here, you can see that it is 60 here. Maybe they might have taken like less than 60 also, okay, but they have not taken. So let's go to this notification. Let me show you the notification, this, so that you'll understand properly. सो फ्रेंड्स देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन लिया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, वरना समझ नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो मेंशन है ये कब का है, हमारा 2021 का, ठीक है। तो 2021 में मैं गुजरात का एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो गुजरात में कितना था, 902 वैकेंसी था। और ST का देखिए 2021 में, ओके, हम रिमाइंड कर देते हैं, ST cutoff was 60, minimum 60 was there, okay. But in 2022 the cutoff changes to 50. There was a change. See, one thing we can see here,
about the cutoff in 2021 still 50 backlog vacancies were there. Okay, 40 backlog vacancy were there. Okay, so next year, let me show you the next year notification 2022. Okay, so this is our 2022. Here we can see that in 2022 the vacancy for STC in this the ST backlog vacancy was 82. In 2021 backlog vacancy was 40 something, 42, right? And 2022 backlog vacancy was 82. So backlog was increasing. So maybe because of this, as the backlog was increasing, they put the cutoff to 50 in 2022. Okay, so this one might be the case. Okay, because we have seen one thing that not all the states the minimum cutoff was 50. It depends on them. So totally we can see that SBI will decide the minimum cutoff for a particular state. For a particular state, it depends on SBI which state they want to put 50 and which state they want to put 60. This is the real thing. So this is a surprise thing which might happen. So while I was analyzing, because one of my brother told me to like analyze this thing. Okay, so I was analyzing this regarding this. So I came across this. So not all the state cutoff was 50. Okay, in 2022. Okay, so it depends on, like we have seen that in 2018. Okay, let me show you one more thing. When we check this point, okay, Gujarat, here there were no backlog vacancy in 2018. Okay, here the cutoff was around 60 only. For minimum cutoff was 60, but for Haryana we have seen it was 44. Where is Haryana? Okay, Haryana we can see here. Haryana, okay, was there any backlog vacancy? No backlog vacancies were there, and the cutoff was 44.25. right? I've shown you the cutoff. So see, one thing we have seen here, that it totally depends on them. Totally depends on SBI what they want to do. Actually overall we can analyze it. So simply overall thing out here is, let us go. So as we have seen here that Haryana cutoff was 44.25 for SC, and for ST it was 44.25 in 2018. Okay, and the same thing has happened in 2022. We have seen that for Gujarat it was 50, and for Maharashtra we have seen that 52.25. But the thing was that for SC the category cutoff was not changing. For ST it was 50, but for SC it was more than 60 only. See, it was more than 60. So this is a very confusing condition. Okay, very confusing condition. I hope you are understanding what I'm saying here. ST here it was 52, and here SC cutoff was 68. Now what can I suggest from here? Okay, or what we can get the overall review from here, that I hope you understood that no one can decide the minimum cutoff. Simple. Minimum cutoff is very risky. Okay, it cannot be decided by anyone here, the minimum cutoff. It totally depends on SBI, and whether the backlog vacancies are there or not there, that does not matter so much. Okay, so that depends on SBI in which state they want to put the cutoff around 50, and in which state they want to put in 60. So there might be a possibility of 50 this year,
in some of the state. So we don't know which state it can be, okay, because we have seen this case, okay, this case we have seen it, okay. 50, so 60 also possibility is there for ST and SC, this also for ST and SC. So for OBC definitely it will be more than 60, so just be ready for it, okay. Just check your backlog vacancy. Now if we check this year backlog vacancy, okay, if we check this year backlog vacancy, see here in Gujarat, it's not exactly that according to backlog the cutoff will change, it depends on SBI, okay. So here we can see that in Gujarat the backlog vacancy is 161 for ST, okay, and there are many backlog vacancies in different categories. So what can we say here normally? So it depends on them, okay, totally depends on them. Otherwise, see here 161 is backlog and 160 vacancies reported. I hope you are getting what is happening here, okay. So overall what we can do here, wait, let me check it, okay. So overall I'll just suggest you one thing, that totally depends on the SBI what they want to do it here. So actually this is a very important point, that's why I thought of discussing with you all, okay. So you just stay positive with whatever attempt you have. Even your attempt might be 50 also in some case, or more than 50 also, so you don't have to worry, just stay positive, okay. So just stay positive and focus in your स्टडीज एंड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम, ओके दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे केस जो है ना थोड़ा क्रूशियल है मैटर यहाँ पे, और ये बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि 50 लिया जाएगा या 60 लिया जाएगा, क्योंकि हमें देखा गया है कि अगर मैं 16 से बात करूँ यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ठीक है, 2016 से अगर बात करें, ठीक है, 2016 हो गया, 2017 हो गया, 2018 हो गया, 2019 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, 21, 22, 23, ठीक है, अब ये 24। तो चेंजेस हमें कहाँ को देखने को मिला है, देखिए 16 में भी कट ऑफ एसटी का 60 था, 17 में भी 60 था, 18 में चेंजेस आया, ठीक है, 18 में चेंजेस आया, 19 में भी 60 था, 20 में भी आपका 60 था, 21 में भी 60 था, 22 में चेंजेस था, यहाँ पे 50 के अराउंड में आया, ठीक है। और भी बहुत सारे स्टेट में 50 होगा, यहाँ पे 2 ही है, लेकिन बहुत सारे स्टेट में भी 50 आपको देखने को मिला होगा। आप इंटरनेट पे सर्च करिएगा या गूगल कीजिएगा, यूट्यूब कीजिएगा, लेकिन आपको हर एक स्टेट का नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 2022 में सिर्फ आपका गुजरात और महाराष्ट्र में हुआ होगा 50, बहुत सारे स्टेट में 50 किया होगा ST SC का, ठीक है, ठीक है। तो और ये भी देखा गया कि बहुत सारे स्टेट में ये 50 भी गया है और 60 भी गया है। तो अब टोटली SBI पे डिपेंड करती है कि वो SBI कौन कौन सा स्टेट में कितना देना चाहता है। तो इस बार जो पॉसिबिलिटी है दोस्तों, ये 50 का पॉसिबिलिटी है, मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है। बाकी SBI पे डिपेंड करती है SBI क्या करना चाहती है। अगर SBI चाहे तो 60 पे लेती है तो बैकलॉग फिर से जाएगी बहुत ज़्यादा, तो बैकलॉग जाएगी तो फिर से आपका सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आने वाला, उसमें ऐड होगा। तो दोस्तों अब SBI पे टोटली डिपेंड करता है कि उसको करना क्या है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग बस अपना होप कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, जितना अटैम्प्ट हुआ है, अगर 55 65 कुछ भी अटैम्प्ट है, तो जो भी लोग कट ऑफ पे वीडियो बना रहे हैं, सिंपल सा मेरा यही कहना है दोस्तों, जो भी यूट्यूब पर कट ऑफ पे वीडियो बना रहे हैं, चाहे मैं क्यों ना हो, कोई भी हो, प्रिडिक्शन करना ये SBI में काम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए एक बात ये भी है, रिज़ल्ट आया तो देखा गया कि 70 के ऊपर जनरल को लिया जा रहा है और EWS को लिया जा रहा है, और हो सकता है यही ज़्यादा चांस है कि 70 के ऊपर ही लिया जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है, ठीक है, जो 70 के ऊपर लिया जाएगा। लेकिन 1% हम लोग यहाँ पे चांस छोड़ेंगे, क्योंकि SBI गेम खेल सकती है यहाँ पे। तो SBI अगर गेम खेली तो वो आपका चला जाएगा, आपका 60 तक भी अगर आ गया तो बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे दोस्तों। अगर ये चाहेंगे कि फिलअप हो जाए SBI का ये पूरा वैकेंसी,
तो डेफिनेटली वो लो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पेपर का लेवल जो था दोस्तों डेफिनेटली डिफ़िकल्ट था। ठीक है, तो इजी बहुत लोग कह रहे हैं इजी, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इजी नहीं था दोस्तों। ठीक है, 10 अप्रैल का पेपर टफ था, लेट इट बी फॉर वट एवर कैटेगरी। तो दोस्तों टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, बाकी आप ऊपर वाला के ऊपर छोड़ दीजिए। अब आपने मेहनत किया है, भले ही आपका 50 के ऊपर अटैम्प्ट है, 60 के ऊपर अटैम्प्ट है। और कुछ भाई बहन पूछ रहे थे कि एक्स सर्विसमैन, PWD, ये सब का क्या सीन है। देखिए दोस्त, इसका भी यही सीन है कि मिनिमम कट ऑफ रहेगा ही SBI, और उससे एक स्टैंडर्ड से वो लोग नीचे नहीं जाएंगे। बाकी वो SBI के ऊपर है, वो जाना चाहे तो 30 पे भी जा सकते हैं, बाकी जो एक्स सर्विसमैन है कोई कैटेगरी के लिए। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं गया है। सबसे लोएस्ट जो गया है मेंस में 85 ही गया है अभी तक। अब 50 भी वो क्या गया है, कुछ कुछ स्टेट में गया है, सारे स्टेट में नहीं गया है, कुछ कुछ स्टेट में 60 ही रखा है। तो ये थोड़ा अजीब सा केस है दोस्तों, थोड़ा समझना बहुत डिफ़िकल्ट है ये। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। लेकिन एक ही बात है पॉजिटिव यहाँ पे कि आपकी रिज़ल्ट सस्पेंस में है। ठीक है, रिज़ल्ट सस्पेंस में है। आपने 70 अटेम्प्ट किया, 65 अटेम्प्ट किया है, 60 अटेम्प्ट किया है, 55 अटेम्प्ट किया है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ भाई बहन पूछ रहे थे एक सर्विसमैन का क्या 40 तक होगा, हो सकता है, 40 तक हो सकता है। ठीक है, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। यहाँ पे ये नहीं कि डिमोटिवेट कर दूँ आपको और एक यही बात बताऊँ कि डायरेक्टली 70 से नीचे नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि SBI कुछ भी कर सकती है। ठीक है, देखा गया है, मैंने आपको प्रूफ के साथ देखा है यहाँ पे। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप आप यहाँ तक वीडियो देखें तो आपको समझ आ गया होगा, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा अभी तक आपका। तो SBI सरप्राइज़ है, तो वेट फॉर इट। इट कैन बी, कट ऑफ कैन बी फ्रॉम 40 to 70। ठीक है, ये गैपिंग में हो सकता है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। हो सके तो टेलीग्राम भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, और पर्सनली मैसेज कीजिएगा ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील हो तो। यहाँ तक वीडियो देखें तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे, ट्रस्ट करते हैं तो ही देखे होंगे, वरना तो नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो गई थी, लेकिन डिटेल मुझे बात करना था इस बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।